Hello everyone, welcome to the next lecture on the memory based questions. Today I will explain you the second part of the real analysis. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. The first part of the real analysis solutions you can see at my YouTube channel Dr. Harishkar. Also you can see the complex analysis, linear programming problem, linear algebra, calculus of variation, integral equation, all are available in this single playlist. You can follow, subscribe and watch all this lecture to crack the examinations in a simple manner. If you are interested to join with me, you can scan and join my WhatsApp. This is a fifth WhatsApp group I have created free of cost to everyone. In this lecture, I will cover the 4 different questions. This is related to the part C of the real analysis. Because first of all, students, make sure these are the memory based questions. In the examination, only the 4 options will be given. But because this is a memory based question, some students have give me some few options, some have given another option. So I club all these options in a single question. Second question is related to the continuity and differentiability. Third question is related to the limit of the functions. Fourth question is related to the convergent and divergent of the infinite series. All these questions are very easy. You can solve each question within the 1 minute time periods. But how? That's again a simple. If you already watched my lecture on the infimum and supremum, the last minute revision lecture on the continuity and differentiability, PY question series of the sequences and series of the real number, then you can get your all answers within the 1 minute time periods. कैसे? अभी देखते हैं इस वीडियो में. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यू कैन मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. What I have told you, whenever you have seen -1 raised to power n, you can always make into the two forms when n is even, when n is odd. Fine. When n is even, this number is a positive, so it's a 2n minus 1 over n. When n is odd, then the answer will be 1 over n. फाइन, आपके आंसर खत्म हो गया. बस ये से ऑरली करते जाइए. तो लिमिट निकालिए इसकी. दैट नंबर विल गोज टू द इंफिनिटी, दैट नंबर विल गोज टू द 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट इनफिमम, लिमिट सुप्रीमम. तो सुप्रीमम कितनी वैल्यू होगी? इंफिनिटी. और मिनिमम वैल्यू विल बी 0. द फर्स्ट ऑप्शन सेट लिमिट इनफिमम इज -1, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया. लिमिट सुप्रीमम इंफिनिटी इज 1 बट इंफिनिटी होना चाहिए, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. रिमेंबर स्टूडेंट, दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. अगर यहां पे आपका ऑप्शन 0 था और यहां इंफिनिटी था, देन दे आर करेक्ट ऑप्शंस. फाइन. बट मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो आप. नाउ look at the infimum and the supremum. Now what is the value of the infimum of the an? What is the value of the supremum of the an? Fine. सबसे पहले आप ये देखिए, look at that. Whenever n is odd, so what are the values? It will be -1, it's a -half, sorry. Whenever n is odd, then it's a -1. Second value will be -1 over 3. Third value will be -1 over 5 and so on. Clear? So that means what is the minimum value? -1. If you look at the n is even, so if n is my 2, then it will be 4 minus half, that's a positive number. Another one is again 8 minus 1 over 4 positive and so on. So what is the minimum of all these numbers? -1 is a minimum, that will be my fine. And what will be the supremum? Supremum, because it goes to the infinity, that will be infinity. Infimum of the an is 0, that's wrong because the answer is -1. Supremum of the an will be infinity, yes, that option is the correct one. And from these two options, what you conclude? -1 is less than of an is less than infinity. That means you have the bounded below but not above. Fine. So you can see it's a bounded below but not above is the right answer. E option is the cancel. D and F are the right answer of the problem. Look at the second one. Your target is to check the continuity and differentiability. It's very simple. देखिए, आप टाइम को नोट कर लेना. जब मैं उसको सोल्यूशन को सॉल्व करूंगा, आप कहोगे सर 15 सेकंड में आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया.
कैसे खत्म कर दिया? अगर आपने ऑलरेडी मेरा ये लेक्चर सुना होगा, लास्ट मिनट रिवीजन ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो कैसे बताया था मैंने? अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ, सॉरी आप इसको इस तरह से कर लेते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो आपकी लिमिट 0,0 पे डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, यही बताया था मैंने आपको। वेन एवर द डिग्री, आप इसको, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, whenever the degree of the numerator is less than equal to degree of denominator, the limit does not exist। अब यहां पे देखिए डिग्री कितनी है? सेम, तो इसका मतलब पहला आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट ऑप्शन। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो व्हाट डज इट मीन्स? द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एट 0 0। इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दैट इंप्लाइज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट ही सेड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर यहां पे ऑप्शन था फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज एफ एक्स एंड एफ वाई। तो एफ एक्स को कैसे निकालोगे आप? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स कोमा 0, एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय एक्स, सो द लिमिट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, व्हाट इज एक्स कोमा 0? वाई विल बी 0, a x square, so that will be a, 0,0 is 0, so clearly say limit does not exist. Similarly you can say the fy, limit y approaches 0, उस केस में x 0 हो जाएगा, that is a b over y, again you can see the limit does not exist, so limit does not exist is the, so a, b and d are the right answers. अगर यहाँ पे पूछा which of the following statements are correct, फाइन, देन ए बी डी आंसर हो जाएंगे। अगर इफ दे से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन सी इज द ओनली राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ओके, लुक एट दिस अनदर वन, और दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली रेशनलाइज देम। सो वंस यू कैन रेशनलाइज, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a plus b, a minus b, so that will be minus divided by x square plus 3 and x square plus 2, so that number will be x divided by x square plus 3 and divided by x square plus 2. Now you can take the limit x approaches infinity. I can write this number is x square, divided numerator and denominator by x square, you will see the answer is 1 plus 1, that is a 1 over 2 is the right answer of the problem. Look at this another one, consider the infinite series, which of the following is my convergent for the values of the alpha and beta? It's a very simple way. Always remember students, whenever the series is p, fine, then this series is convergent whenever p is my greater than 1, this series is divergent whenever p is less than equal to 1. But make sure students, log of n का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 over n, ये यहां पे लिखा होना चाहिए आपका पास, then only you can say p is greater than 1 convergent, otherwise divergent. So look at the first option, alpha is greater than, beta can have any value, तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, let's say beta is my 0, फाइन। अगर बीटा 0 है तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी? 1 over n log of n अल्फा। अब आप देखिए इस log n का डेरिवेटिव लिखा हुआ है बाहर 1 over n, so this series is convergent only when alpha is greater than 1, so yes, this is the correct options. Look at the second, यहां पे आप अल्फा को 0 ले लो, बीटा को भी 0 ले लो, it satisfies the conditions. अगर आप यहां पे फिल करोगे, then the series will be 1 over n, and we all knows by the p test this is my divergent. Fine, alpha is greater than 1, beta is my greater than equal to 1, alpha greater than 1 तो आपको मिल गया, फाइन। अगर ये आंसर करेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, लेकिन बीटा इज इक्वल टू 0 पे आपकी सीरीज क्या मिली आपको? कन्वर्जेंट, लेकिन यहां पे बीटा 0 तो है ही नहीं, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन. When alpha is equal to 1,
then it will be n log of n log of n. फाइन. अब यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहां पे भी. यहां पे क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव यही है आपके पास. फाइन. तो अगर मैं इस चीज को इस तरह से देख लूं, 1 ओवर इसको y ले लेता हूं, देन इट्स अ log ऑफ y हो जाएगा. ये सेम चीज, बिकॉज log y का डेरिवेटिव क्या है? 1 ओवर y. यहां पे यही चीज का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स बीटा मस्ट बी greater than 1. So yes, this option is also the correct option. So the right answer is A and D are the right answer of the problem. Fine. अगर कोई और options होंगे, then we will see once we have received the exact question paper from the CSR net. So I hope you have easily seen these questions. For more detail, you must watch about these 3 lectures available at my YouTube channel. I hope you can share this video. If you are really interested, you can scan and join my WhatsApp group. We will see the next lecture very soon. Till then, you can share the video, like and comment on this video. Happy learning always. Thanks for the watching. Best of luck.